Okay, now we are going to start with 5.3. But before we go to 5.3, let me explain you what is a slope. See, slope is inclination. मैं यहाँ से चल के आ रहा हूँ, I am walking, and then there is a mount. So I have to climb the mount. That means we have to climb on the slope. In physics, when you climb a slope, you have to apply exert more force to overcome the gravitational pull of the earth, because you are moving in the opposite direction of the gravity. Same way, when you are coming down from the slope, is exactly opposite. You are pulled faster by the gravity. So we have to apply brakes. We have to apply some resistance. The frictional force has to be increased so that we cannot come down. We don't have a free fall. We or slide down the. We can walk. So we have to slowly walk. But in mathematics, because in physics also we'll apply this concept of mathematics in order to understand the effect of it. So in mathematics we define slope in a particular manner. Slope can be defined as positive, can be negative, or can be zero. I will explain you here today. We are interested in the positive value of a slope, not a negative value. Okay, let's start now. Or neither even zero, but zero and this negative might come across. They may ask you in 2 marks question if they want to just create a confusion. Of course, you don't have multiple choice questions in the exam, but in 2 marks question they may ask two questions or maybe 4 questions in 4 parts. In 1 question they may make 2 parts to test your knowledge. So let's understand what is the slope of a line. Suppose x1, y1 and x2, y2 are any 2 points on a given line. It can be any line, huh? It can be parallel to, we are talking about xy plane, so it can be parallel to x-axis, it can be parallel to y-axis, it can be x-axis itself, it can be y-axis itself, or it can be any inclined oblique line. Okay? Any 2 points you take, the coordinates of these 2 points are x1, y1, x2, y2, then the slope will be defined as the ratio of y2 minus y1 upon x2 minus x1. Slope is generally represented using small letter m. So slope of a line can be generally written as equal to m, or the formula for this is y2 minus y1 upon x2 minus x1. There is one more point which I would like to explain you. Suppose we have 2 lines with slopes m1 and m2. Then m1, then if m1 equal to m2, lines are parallel, and if m1 into m2 equal to minus 1, then lines are perpendicular to each. Please note this point. ये point भी note कर लो. बाद में देखेंगे. पहला ये लिखेंगे first. Suppose now you look at this figure carefully which I have drawn. This is x-axis. Horizontal is x-axis. Vertical is y-axis. They intersect in point O. So it's a xy plane. I have a line L, we can see, which passes through point A, which is 4, 0. Then there is a line N which intersects x-axis
and at point 7 and intersects line L in point B. So coordinate of B is 6, 1, 6 corresponding to x-axis and 1 corresponding to y-axis. Misunderstand मत करो, ये D नहीं है. D is here. This is D. 0, -1. Sorry. 1, -1, 0. Okay. Then we have line T, which passes through point D and intersects line N in point C. The coordinates are x-axis 3 and y-axis 1, 2, 3, 4. Please see carefully these lines and try to understand. Look at this line. This is the angle. Line L makes angle theta. Theta 1 we call it. With the x-axis. This is here theta 2. Now theta 1 and theta 2 are acute angles. They make acute angles with respect to positive direction of x-axis. Okay? Look at this. This is theta 3. Line L is making angle theta 3 with the positive direction of x-axis. When we are determining slope, remember, it is, वो tan part छोड़ दो, it is the angle made by the line. Tan theta हम बाद में देखेंगे. ये part देखो, angle made by the line with positive direction of x-axis. Angle made by line with positive direction of x-axis. So ये positive direction है. Theta 2, theta 1, they are acute and theta 3 is obtuse. Whenever a line makes acute angle with respect to positive direction of x-axis, slope will be positive. And if a line makes obtuse angle with respect to the positive direction of x-axis, as in this case line N, then the slope will be negative. Okay? यहाँ पे ये हमने एक्सप्लेन किया. Slope of line L and T, line this L and T, I told you theta 1, theta 2, they are positive because they make acute angles. Line N is making obtuse angle, hence a negative slope. Slope of line T, slope of line T is more than slope of line L because theta is bigger, you can see. Slope of line T is more than slope of line L. It depends upon angle. It all depends upon angle. As the angle goes on increasing, the value of theta goes on increasing, the value of tan theta will also increase till a point where 90 पहुंचने के बाद it is not defined. How not defined we will see later on. Why not defined? देखो, slope of a x-axis. Slope of x-axis is 0 minus 0 upon x2 minus x1 equal to 0. See, we know this is a slope.
of any 2 points. So if I take any 2 point on x-axis, if I take any 2 point on x-axis, मतलब ये axis की, तो उसके y coordinates तो 0 होंगे. Any point on x-axis will have y coordinate 0. So y2 minus y1 will be 0. And 0 upon any value will be 0. So slope of x-axis is 0. और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस देखो ना, इंटरेस्टिंग, मैंने यहाँ लिखा है tan 90 इज 0. अब और मैंने डिफाइन क्या किया आपको, एंगल मेड बाय ए लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. नाउ प्लीज सी हियर, दिस y axis is perpendicular to x axis. Y axis is perpendicular x axis. That means this line y axis makes angle how much? 90. Makes angle 90 with the positive direction of x axis. And even so, what will be tan 90? Tan 90 is not defined. कैसे? देखो, यहां भी देखेंगे, यहां भी देखो, slope of a y-axis is same as tan 90. Tan 90 is y2 minus y1 upon x2 minus x1. But any point on y-axis, any point on y-axis will have its x-coordinate 0. So यहां तो 0 होगा. Now any value divided by 0 cannot be determined, because maths में anything upon 0 is not defined. Hence we cannot determine the slope of y. मतलब impossible बोल सकते हो, not possible. वैसे ही any line which is parallel to x-axis will have slope 0, and any line which is perpendicular to x-axis, slope cannot be defined. और ये लास्ट पॉइंट बहुत जरूरी है, याद रखो. सपोज दे गिव यू 2 लाइन्स, उन्होंने 2 लाइन आपको दी, दे गिव यू 2 लाइन्स एंड देयर स्लोप्स आर m1 and m2. देयर स्लोप्स आर m1 and m2. देन याद रखो, इफ m1 इक्वल टू m2, अगर दोनों स्लोप इक्वल है, इफ m1 इक्वल टू m2, देन द लाइन्स आर पैरेलल, जो अभी हम इस्तेमाल करेंगे इन प्रैक्टिस सेट. लेकिन एक पॉइंट मिसिंग है आपके यहां, जो शायद टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, लेकिन प्रॉब्लम प्रैक्टिस चैलेंजिंग क्वेश्चन में पूछे जा सकता है. इफ दे आस्क यू और इफ दे टेल यू दैट शो दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन रिमेंबर यू हैव टू फाइंड देयर स्लोप्स, एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्लोप m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 is -1, product of the two slope is negative -1, then remember the two lines are perpendicular to each other. Okay? अब ये perpendicular मतलब x और y axis ऐसे नहीं होंगे, वो ऐसे भी हो सकते हैं. Incline this way and incline this way, एंगल उन दोनों के बीच में, दोनों एंगल, दोनों जो है वो क्या है, दोनों का स्लोप m1 m2 पॉजिटिव हो सकता है, या एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, हैज टू बी, बिकॉज देखो ये क्या बोलेगा, आपको देगा पॉजिटिव स्लोप, लेकिन ऐसा लाइन होगा ये ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव स्लोप देगा. ओके, एट प्रेजेंट दे आर नॉट एक्सप्लेन यू नेगेटिव स्लोप उनको दिया तो, लेकिन यहाँ देखो नेगेटिव स्लोप होता है और पॉजिटिव स्लोप होता है. मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव तो नेगेटिव, लेकिन वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे तो -1 आपको मिलेगा. मतलब जैसे 2 इंटू -1/2, सो 2 कैंसल, -1 आएगा. देन द टू लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब यहां देखते हैं ये tan कहां से बीच में आता है. देखो, आई हैव गॉट अ लाइन L which is making angle theta with a positive direction of x axis. I take 2 points P x1 y1 and Q x2 y2 on that line. अभी मैं क्या कर रहा हूं, I am going to draw perpendicular from P to x axis, that is it intersecting U, and Q से perpendicular draw करो on x axis, वो intersect करेगा S. ओके, मैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. देखो
whatever be the coordinate of whatever is the coordinate of x for point P will be the same for point U. x coordinate same होगे तो x1 यहाँ है तो ये भी x1 होगा, लेकिन coordinate of U will be coordinate of y coordinate of point U will be 0. Same way अगर point Q ले रहा हूं मैं, उसका x कोऑर्डिनेट x2 है तो s का कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा, लेकिन s का y कोऑर्डिनेट 0 होगा बिकॉज दैट पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस. अभी ध्यान से देखो, सो वी कैन से PRSU इज अ रेक्टेंगल, सो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो ये डिस्टेंस दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पे हमने स्टार्टिंग में किया था, तो इट इज x2 minus x1, तो ये PR वैल्यू विल बी x2 minus x1. सेम वे अगर मैं R पॉइंट लेता हूं व्हेन आई ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो ये ज्वाइन करने के बाद ये इंटरसेक्ट हो रहा है, PR इंटरसेक्ट्स इस QS इन पॉइंट R. तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट R का कोऑर्डिनेट जो है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा Q R और S का, Q R एंड S का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, दैट इज x2, लेकिन y कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा क्योंकि ये x एक्सिस पे है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ये है पैरेलल, ये लाइन में है P के साथ, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है दैट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ R, और ये y3 आप जानते हैं क्यू का. नाउ फाइंड QR, वापस वो डिस्टेंस फॉर्मूला से यहां, ओके, इट विल बी सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर लाइन पे. अभी ये नंबर लाइन समझो, y एक्सिस नंबर लाइन है, तो ये QR विल बी पैरेलल इक्वल टू दिस, यहाँ जैसे हमने यहाँ किया वैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रेक्टेंगल बना के कर सकते. तो QR की वैल्यू आएगी y2 minus y. So slope of a line L is equal to n is equal to tan theta. Tan theta क्या है? tan theta मालूम है ना, ट्रिग्नोमेट्री मैंने सिखाया नहीं है लेकिन याद रखो, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लेसन है. tan theta is opposite upon adjacent, opposite side upon adjacent side. तो theta is opposite side, ये QR एंड एडजेसेंट, ये हाइपोटेन्यूज को लेना नहीं है बिकॉज ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज लेना नहीं है, तो ये QR अपॉन PR. QR हमने फाइंड किया y2 minus y1, PR is x2 minus x1, और नाउ इट विल यू विल अंडरस्टैंड ये क्यों स्लोप का y स्लोप इज y, ये रेशियो क्यों है y2 minus y1 अपॉन x2 minus, बिकॉज इट्स अ tan रेशियो. याद रखो, स्लोप इज डिफाइंड एज द tan रेशियो ऑफ एन एंगल मेड बाय द लाइन on the positive direction of x axis. और ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बाद में एक्सप्लेन करूंगा व्हेन आई गो टू ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इसका हमें इस्तेमाल अभी करना होगा, तो याद रखो ये tan ratios. Let us now start with practice set. Okay, let's start with the practice set. .3 question 1. Now they have given us certain values. They have given us certain values of angles made by the line, or we can say they have given us theta, angles made by the line with the positive direction of the x-axis. So the angles are 45, 60 and 90. I already given you a table, just set the values. Solution 1. Slope of line equal to tan 45 degrees equal to 1. Second, slope of line tan 60 degrees is 1 upon root 3. Because you know these values from trigonometry.
slope of line tan 90 not possible to determine. Okay. Next, question number 2. They are given us different values and you have to find the slope of them. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जैसे हम लोग फटाफट कर सकेंगे. क्वेश्चन 2 फर्स्ट क्या दिया है? A 2,3 and B 4,7. These are the 2 points on number line, so you have to find slope of line AB. Then P, they are given us -3, 1, and Q is 5, -2. Third, C and D. C is 5, -2, D is 7 and 3. 5, -2, D is 7, 3. Go 4 point. -2, -3. L is -2, -3. M is -6, -8. 5. -4, -2. F 6 and 3. 6. T 0, -3. S 0, 4. They say find the slope of a line passing through given points. So आप जानते हो what you know very well what is the slope of a line. Slope of a line is small m. Formula मैंने लिख के दिया था इसके पहले. Small m and m is nothing but y2 minus y1 upon x2 minus. So let us now start solving. Question number 2. Solution. Let or suppose co-ordinates of points A and B x1, y1 and x2, y2 and slope B small n. Now therefore x1 क्या है लिखो, y1 क्या है लिखो, x2 what is x2 and what is y2. क्या है x1 2, y1 3, b का x2 4, y2 7. So start करो. Therefore slope of line AB, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये कितना होता है? y2 is 7 minus 3 upon 4 minus 2. That is 4 upon 2. Therefore,
स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 2। ये आपका आंसर है। अभी सॉल्यूशन 2 पे जाते हैं। सेम वे हम पहले किया तो ऐसे ही करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। Now we consider this is point P and this is point Q. ये x1, y1, x2, y2. So this will be minus 3. y1 is 1. ये 1 है. x2 is 5. y2 is minus 2. So substitute the value here. ये होगा तुम्हारा लाइन PQ. So y2 will be minus 2 minus 1 and this will be 5 minus minus plus 3. So this will be minus 3 upon 8 आंसर आता है. So your slope will be slope of line PQ will be minus 3 upon 8. अब जाते हैं थर्ड पे. So we have completed first question, we have completed second question. Now we go to third question. C and D है. Point C and D. C is 5, x1, y1 is minus 2, x2 is 7, y2 is 3. तो ये क्या होगा? 3 माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस 7 minus 5. So this is 5 upon 2. Line PQ. अब next question. So third is completed. Before the L and M, ये भी भूलना है आपने को ही. Fourth question. So this will be points L और ये M, x1, y1, so it will be minus 2, minus 3, minus x2, y2 is minus 6, minus 8. तो यहाँ पे y2 कितना आता है? minus 8, माइनस इंटू ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 3. x2 ये आपको समझा? समझाता हूं मैं. ये माइनस 8, ये माइनस और ये माइनस 3. x2 इज माइनस 6, माइनस और माइनस 2. तो ये होगा माइनस 8 प्लस 3 अपॉन माइनस 6 प्लस 2. दिस विल बी माइनस 5 अपॉन माइनस 4. माइनस माइनस कैंसल, वी गेट 5 अपॉन 4. So line LN 5 upon 4. अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. ENF E, equation number 5. E is an F. So E x1 y1 is minus 4 minus 2, 6 and
3. तो ये आएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2, 6 minus minus plus 4. So 5 upon 10, this will be 1 upon 2. So line EF, slope of line EF is 1 upon 2. So fifth question complete. Ab last. Sixth one. Solution number 6. Tn is x1, y1. So x1 is 0, y1 is minus 2. x2, y2. So x2 is 0, y2 is 4. Start करो. y2 कितना है? 4. ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 अपॉन x2 minus x2 is 0 minus 0. So this will be 7 upon 0. Slope of line TS cannot be determined. Cannot be determined. Because anything upon 0 is not defined. तो यहां लिखो, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो यहां लिखो not defined. This value is not defined, hence cannot be determined. अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना है. ये रहने देता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं. First, they're given us 3 points. A -1, -1. B is 0, 1. Zero, 1. And C is 1, 3. Second. D is -2, -3. E and F. E is 1, 0, 2, 1. 1, 0, 2, 1. ओके, अभी 2, 5, 3, 3. Comma 3 and n is 5, 2. 5, 1 check. Fourth, 2, -5. 2, -5. Q and R is 1, 3, 2, 3. 1, -3, 1, -3, -2, 3. 1, -3, -2, 3. ये है अपना Q और ये है R. Fifth question. R 1n -4. -2, 2, -3, 4. -2, 2.
and t is minus 3, 4. Sixth question. 4 minus 4, 4. K and N. K is minus 2. Minus 2, 5 upon 2. And N is 4 and minus 2. क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन वेदर द स्लोप फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर. दिखाना है अपने को वेदर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर पॉइंट्स कोलिनियर के लिए हमें स्लोप लेना पड़ेंगे. विल टेक स्लोप ए बी पहले एंड देन बी सी. ओके, दो काफी हो जाएंगे. इफ दे आर पैरेलल, मतलब इफ द स्लोप्स आर इक्वल, देन दे आर द स्लोप्स आर इक्वल एंड दे हैव अ कॉमन पॉइंट. दैट इज बी इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन A, B and C, A, B and B, C. So they are collinear हो जाएंगे. Suppose coordinates of points A, B and C, B. x1, y1, b is 0, 1, 1, 3. Now we go for slope AB. Slope of line AB equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. That is 1 plus 1. ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये होगा 0 माइनस माइनस प्लस 1. So this will be 2. Slope of line AB is equal to 2. ध्यान दो. Now slope of line BC, it will be y3 minus y2 अपॉन x3 माइनस x2. ये होगा आपका 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0. दैट इज 2 अपॉन 1. दैट इज 2. शॉर्ट 2 यहीं लिख देते हैं. Therefore slope of line BC is 2. Here point B lies on both the line AB and line BC. Therefore, क्या पूछा उन्होंने? कोलिनियर. ओके. Therefore, points, अरे point B. Point B lies on AB and BC. Therefore, points A, B and C are collinear. Okay. अभी नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट, ये फर्स्ट हो गया. नाउ वी गो टू सेकेंड सॉल्यूशन. तो याद रखो हमें क्या करना है. इससे हम लोग सिर्फ इसको चेंज करने, बाकी सब सेम रहेगा. ये वैल्यूज बदलेंगे. चेंज. So let us start. Question 2.
point D, E, F. B x1 y1 x2 y2 x3 y3. So ये point लिखो, x1 is -2 -3, E is 1 0 और F का x3 y3 will be 2 and 1. माइनस करो, 0 minus minus plus 3, 1 minus minus plus 2, so this will be 3 upon 3, 1. स्लोप ऑफ लाइन D, पहले हमने क्या लिया है, D और E. स्लोप, सॉरी, ये लाइन है D और E का, फर्स्ट 2 पॉइंट्स. स्लोप ऑफ लाइन DE is 1. अब स्लोप ऑफ लाइन EF. EF के लिए y3 minus y2, so 1 minus 0, 2 minus 1. ये भी 1 upon 1, that is 1. Slope of line EF equal to 1. Therefore, point common क्या है, point दोनों में E. Point E lies on both line DE and line EF. Therefore, points D, E and F are collinear. सेकेंड हो गया. अब थर्ड, LMN है पॉइंट्स. पहला लाइन होगा LM, now we are in line points L, M or N. If your coordinates are x1 y1 x2 y2 x3 y3. So write down L के क्या है, 2, 5, M is 3, 3, N is 5, 1. So पहला लाइन है LM. y2 minus y1, so 3 minus 5 upon 3 minus 2. So ये minus 2 upon 1, answer is minus 2. Slope LM is minus 2. MN, slope y3 minus y2, so 1 minus 3 upon 5 minus 3, this is minus 2 upon 2, this is minus 1. 1 minus 3, 5 minus 3. So the slope of MN equal to minus 1. Here, slope of line LM not equal to slope of line MN. Therefore, points L, M and N are not collinear. थर्ड हो गया. फोर्थ, देखो स्लोप इक्वल नहीं है, सो कोलिनियर नहीं है. इक्वल होंगे तो कोलिनियर, नहीं होंगे तो नहीं, नॉट कोलिनियर.
वही फोर्थ, P Q R। P है 2 -5, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। X2 is 1 -3, R is -2 3। तो पहला है PQ, तो y2 minus y1 कितना होता है? -3, माइनस माइनस प्लस 5, 1 -2, सो ये 2 upon -1 -2, सो लाइन PQ इज, स्लोप ये -2 हो जाएगा। अभी QR, y3 minus, so 3 minus of minus will be plus, -2 -1, so this will be 6 upon -3 is -2. So the slope of line QR -2. Therefore slope of line PQ equal to slope of line QR. Also point Q lies on both line PQ and line QR. Therefore, points P, Q and R are collinear. फोर्थ हो गया। अभी जाते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ इज RST। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। इसे प्लस माइनस डिवाइड करना है। Question number 5. Suppose point R, S and T be x1, y1, x2, y2, x3, y2. तो पॉइंट लिखो R is 1, ये है -4, -2, 2, -3, 4. So line RS पहले। y2 is 2 minus of minus plus 4 upon -2 -1, so it is 6 upon -3 is -2. So slope of line RS -2. अभी slope of line ST, right? 4 -2 upon -3, minus of minus is plus 2. So 2 upon -1 is -2. So slope of line ST equal to -2. Slope of line RS equal to slope of line ST. Point S lies on both line RS and line ST. Therefore, points R, S and T are collinear. So, अपना fifth question हो गया. Now we go to the sixth question. So, sixth question. Point A, K and N. A is -4, 4, -2, 5 upon 4, -2. स्टार्ट करो। पहला लाइन है AK,
it is 5 upon 2 minus 4 upon minus 2 minus minus plus. LCM लो. This is like 5 upon 2 minus 4 upon 1. 4 मतलब 4 upon 1. LCM इसका क्या होगा? 2. Cross multiply. 5 minus 8. और ये आता है 2. So this will be minus 3 upon 2 into 2. This is minus 3 upon 4. So slope of line AK is minus 3 upon 4. Slope of line KN minus 2 minus 2 minus 2 minus 5 upon 2 upon 4 plus 2. इसका मतलब ये क्या होगा? माइनस एलसीएम लेके minus 4 minus 5 the whole upon 2 6. So minus 9 upon 2 into 6. 2 3 2s are 3 3s are. So ये भी minus 3 upon 4. So slope of line AK equal to slope of line KN. Therefore point K lies on line AK and line KN. Therefore point A, K and N are collinear. तो ये 6 भी अपना हो गया. Now go to question number 4 of practice set 5.3. What they are given us is, they are given us a triangle and the 3 vertices of a triangle ABC. Suppose if I draw this is a question of A 1 comma minus 1, B 0 comma 4, C minus 5 comma 3. These are the 3 vertices of a triangle given to you. Now we have to find slope of each side of the triangle. So suppose coordinates of point A, B and C be x1, y1, x2, y2 and x3, y2. ये for example x1, y1, x2, y2. This is x3, y3. Now what will be x1? 1, y1 is minus 1. B, x2 is 0. This is 4. And 5 minus 5 and 3. So find slope of line AB first. It will be y2 minus y1. So 4 minus minus is plus 1. And this is 0 minus 1. So this is 5 upon minus 1. That is minus 5. So slope of line AB is minus 5. Now slope of line BC लेते हैं. Yes. y3 minus y2. So it will be 3 minus 4. And this will be minus 5 minus 0 is minus 1 upon minus 5. This will be 1 upon 5. Slope of line BC is 1 upon 5. Now, slope of line AC equal to this and this.
y3 minus y1 upon x3 minus x1. y3 is 3, minus of minus is plus 1 upon minus 5 minus 1. So it is 4 upon minus 6 minus 2 upon 3. So slope of line AC is minus 2 upon 3. So we completed question number 4. Now we go to question number 5. Question number 5, what they are given us, please see. They say that they are given us 4 vertices, A, B, C, D. Now, we have to prove that this is a quadrilateral, of course, A, B, C, D, and we have to show that this quadrilateral is a parallelogram. मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इसका मतलब इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगे उसका स्लोप सेम होगा, इक्वल होगा. इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन स्लोप, सो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. फिगर ड्रॉ करते हैं टू अंडरस्टैंड. A minus 4 comma minus 7, B minus 1 comma 2, C 8 comma 5, D 5 comma minus 4. Check out. Minus 4 comma minus 5, B value is minus 1 comma 2, C value is 8 comma 5, D is 5 comma minus 4. You have to show these are the vertices of, these are vertices of a parallelogram. मतलब अपने को ABCD is a parallelogram बताना है. This question number 5. Suppose coordinates of points A, B, C and D be x1 comma y1 x1 comma y1 coordinates of point A, B, point B x2 comma y2 point C B x3 comma y3 and point D be x4 comma y4. Therefore, what will be x1? लिखते जाओ. x2 ये y2 हो जाएगा. x3 x4 x1 is minus 4 minus 7 b x2 is minus 1. ये x1 y1 है. ये x2 y2, ये x3 y3. This is x4 y4. x3 is 8, y3 is 5. x4 is 5, y4 is minus 4. So find therefore slope of, पहले लेते हैं AB. Slope of line AB.
So ये y2 y1 minus y1 upon x2 minus x1. क्या है y2 minus y1? 2 minus minus is plus upon minus 1 minus minus plus 4. So 9 upon 3 is 3. Slope of line AB is 3. Therefore, go for next. Slope of line BC. ये है y3 y2. y3 minus y2 upon x3 minus x2. 5 minus 2. It minus into minus plus 1. So this is 3 upon 9. This is 1 upon 3. Now, slope of line CD. ये A है, ये B है, C है. So C का क्या है? फॉर्मूला C और D है, ये दो. So y4 minus y3 upon x4 minus x3. So y4 आएगा minus 4 minus 5 upon 5 minus 8. So I get minus 9 upon minus 3 is again 3. Therefore, slope of line CD is 3. ये point. Last now, slope of line AD. A and D is this, y4 minus y1. y4 minus y1 upon x4 minus x1. y4 कितना है? minus 4 minus minus plus 7 upon 5 plus 4. So this will be 3 upon 9, that is 1 upon 3. Therefore, slope of line AD is 1 upon 3. आएगा 4. Now please compare. From 1 and 3, slope of line AB equal to slope of line AB equal to slope of line CD. Therefore, AB parallel CD. From 3 and 4, slope of line BC equal to slope of line AD, BC and AD. Therefore, BC is parallel AD. Since opposite sides of
quadrilateral ABCD are parallel. Therefore, quadrilateral ABCD is a parallelogram. We'll now go to question number 6. इसको इरेज कर देते हैं. Question number 6, we'll read the question. Find K if now if R 1, minus 1 S minus 2, K and slope of line RS is minus 2. Find K. Let us start. Solution. Suppose co-ordinates of R and S be x1, y1 and x2, y2. Therefore, x1 क्या है, y1 क्या है, लिखो. x2 क्या है, y2 क्या है, लिख दो. x1 is 1, minus 2 and k. Now, slope of line RS is equal to minus 2. But slope of line RS is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Therefore, minus 2 equal to y2 क्या है, k. Minus minus plus हो जाएगा 1. Minus 2 minus 1. Therefore, minus 3 equal to k plus 1 upon minus 3. Minus 2 equal to cross multiply करो. So, minus minus plus होगा 3 to the 6 equal to k plus 1. So, k equal to 6 minus 1. So, k is 5. Final answer. Value of k is 5. Now we go to question number 7. Question number 7 में क्या दिया है? के ये जो है ना, ये अच्छा ये और ये इतना करना है. स्लोप ऑफ अ लाइन
Let's see what they have given us. Question number now 7. If B k comma -5 C 1 comma 2 and slope of line BC is 7, you have to find K. Suppose coordinate of B and C be x1, y1, x2, y2. So x1 will be k, y1 will be -5. x2 will be 1, y2 will be 2. So slope of line BC is 7 is given. So line BC क्या है? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Therefore 7 equal to y2 कितना है भाई? 2. 2 माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है 5. माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए. और x2 क्या है? 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस के, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस के. So 7 into bracket 1 minus k equal to 7. Dividing both sides by 7, तो 7 चला गया. 1 minus k equal to 1. 1 उस साइड लेके जाओ. So minus k equal to 1 minus 1. So minus k equal to 0. K equal to 0. ये आपका आंसर. Now question number 8. Question number 8 देखो. अच्छा, they are given us PQ और RS में दो निकालने पड़ेंगे. I will write on here. They are given us if PQ parallel RS and what is coordinate of P 2, 4, Q 3, 6, R 3, 1, S 5, K. Find K. हमें PQ और RS का स्लोप निकालना होगा. Since PQ and RS are parallel to each other, their slopes will be equal. इक्वेट करके सॉल्व करना है. Solution. Suppose coordinates of P is x1, y1 of Q is x2, y2 of R is x3, y3 and of S is 5, k. Therefore, what is x1, y1 फाइंड करो. x ये P के लिए है. For P, for Q, for R, for S.
sorry, x2 comma y2. x1 y1 will be 2, 4. x2 y2 is 3, 6. x3 y3 is 3, 1. x4 y4 is 5, k. हमें k फाइंड करना है. Now, since sec PQ parallel RS given, therefore slope of PQ equal to slope of RS. PQ मतलब this. Therefore y2 minus y1 upon x2 minus x1 or the RS will be y4 minus y3 upon x4 minus x3. Substitute करो. 6 minus 4 upon 3 minus 2. K minus 1 upon 5 minus 3. तो यह आता है 2 upon 1 equal to k minus 1 upon 2. So we get 4 equal to k minus 1. Therefore k equal to 5. Answer. Value of k is 5. With that we complete 5.3 practice set.